Hello, welcome to my channel. So today we will discuss about menstrual hygiene policy. So this topic is very important from GS2 perspective, governance, and it is very important from the GS1 as well, that is society. But you can use these terms in and use this aspect in the essay paper also. So first of all, why we are reading this topic? Because it's a very general topic. And nowadays, अगर आप देखो यूपीएससी का पैटर्न जो है वो काइंड ऑफ इन सब इश्यूज जो अवेयरनेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके चारों तरफ काफी घूम रहा है. जैसे कि इस बार मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, राइट? सोशलाइजेशन, सोशल आइसोलेशन, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे पिछले 2-3 सालों में. तो इट मीन्स वी हैव टू गिव ideas and emphasize on these kind of topics. So first of all, if we talk about why we are reading this topic, because currently Supreme Court gave guidelines to the center because they want center to focus on the distribution of sanitary napkins. Since we all know that this sanitary napkins are major issue in this menstrual hygiene policy and maintaining this policy, because people are not aware about this sanitary napkins and pads. So that's why Supreme Court gave guidelines that it's a duty of center to focus on the distribution of sanitary napkins at proper level. And then also they also asked center to frame a national model for the number of girls toilet per female population across government aided and residential school, because we don't have like proper toilets for the females in the schools, government building and the government residential programs, right? And government residential schools. So that's why making separate toilet and hygienic toilet is important and essential for the female. Now, first of all, this is a prelims perspective. What is a menstruation? So it's a term for girls when an ovum is unfertilized and a uterus lining sheds and lead to hemorrhage. That's called a menstruation. It has a 4 cycles. तो वो particular एक age के time से होता है. But अगर start देखे तो menstruation actually start from the age of 10 to 15 when actually girls attain puberty, and this beginning is known as menarche. एंड एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनोपॉज, जहाँ पे पीरियड्स जो हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं. सो दैट मे अराइज इन द एज ऑफ लाइक 50 और 45, like it depends upon your lifestyle. Now now main focus, these are the keywords. These keywords are important. If you inculcate these keywords in your answer writing, obviously your answer will give a value addition, right? So we have to focus on the principle of menstrual hygiene policy. So we have to focus on the what are the principles of menstrual hygiene policy. So first of all, access and affordability. This is very important because whenever you're focusing on any kind of policy, so accessing of what? Accessing of toilets, proper toilets, accessing of sanitary napkins, accesses of like awareness about the menstruation cycle, what it is. In some society or in some culture, it is considered as a, yeah, like evil or devil kind of thing, कि अपवित्र माना जाता है. ठीक है, तो एक्सेसिबल होना चाहिए एवरीथिंग. अफोर्डेबिलिटी, इतने हाईफाई नैपकिन्स नहीं होने चाहिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो उसकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर हो, जहाँ पे वी आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी. उस केस में अगर आपको सैनिटरी नैपकिन्स पे पैसे खर्च करने पड़े, इट शुड बी लाइक इन द बजट. तो अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है. इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी. इक्विटी मीन्स like giving the equal things. Like for example, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो you have seen that आपको जो पैड्स होते हैं वो आपको एक पॉलिथीन के अंदर ऐसे रैप करके दिया जाता है, एंड एक तरह का सुपरस्टिशंस माना जाता है. तो दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट्स अ बॉडीली नीड्स एंड अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इंक्लूसिविटी मीन्स इट शुड नॉट बी ओनली अवेलेबल टू ओनली हायर क्लास सोसाइटी. It should be available to lower class society as well. Equal distribution of these awareness. Education awareness, now I already explained you, because nowadays many schools are going for this moral value education. Education awareness at conferences, several NGOs are working for this menstrual hygiene policy and distribution. So awareness is very important from the small stage. This is not only for the girls, but boy and male community also should get aware about this kind of menstrual hygiene policy. Safe and hygienic facility, there should be a proper conduct of toilet. That is very important. And last is waste management. There should be a proper waste management. These sanitary napkins should be biodegradable. Okay. Because if we don't use in a like biodegradable way, it will obviously harm our environment, our ecosystem nearby. And a collaborative partnership, many schools, colleges are working with the NGOs.
they are providing them the awareness related to hygiene policy. So these are the principle of menstrual hygiene policy, which is a government draft. So government only included these keywords. So I really want you to focus on these kind of keywords, so that आप लोग के आंसर राइटिंग के अंदर वैल्यू एडिशन होगा. Now, इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिसीज, कीवर्ड्स तो इंक्लूड कर दिए गवर्नमेंट ने, देन पॉलिसी क्या क्या होनी चाहिए. पॉलिसी होनी चाहिए कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देना चाहिए एंड सेफ प्रोडक्ट देना चाहिए. स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिकॉज एज सच कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो पैड्स को मॉनिटर करता हो. तो कई बार जैसे अब कई बार डेफिसिट एरियाज में पैड जो होते हैं वो काफी हाई प्राइस पे भी बिकते हैं, एमआरपी से ज्यादा. प्रमोट एजुकेशन अवेयरनेस ऑन हाइजीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए. इसे डिबेट भी हुआ था कि सेक्स एजुकेशन एंड दिस हाइजीन एजुकेशन दे शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम. बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो कि ताकि स्टूडेंट्स को और या यूथ जनरेशन को पता हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिसलीड ना हो. Then collaborative with NGO and private sector, this is also very important, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली एक एनजीओ ही होते हैं जो सेल्फलेसली वर्क करते हैं, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि इनको प्रमोट कर सकते हैं इन पॉलिसीज को. देन देयर इज अ प्रॉपर फोस्टर रिसर्च, बिकॉज बहुत सारी आजकल पीसीओडी पीसीओएस काफी सारी जो डिजीजेज हैं उसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन का काफी आता है, पॉइंट इंक्लूडेड होता है. तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए. एंड पॉलिसी इंटीग्रेशन, पॉलिसी इंटीग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड दिस मेंटल हेल्थ पॉलिसी. काफी जो भी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड वे के अंदर काम किया जा सके. बट गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दो चैलेंजेस देखे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस. फर्स्ट चैलेंजेस इज अफोर्डेबिलिटी, कि अफोर्डेबल नहीं है. एंड दूसरा उन्होंने ये बोला है कि वुमेन जो 12 साल की जिन्होंने स्कूलिंग की है, वो जो है वो काफी अच्छा हाइजीन मेथड यूज करते हैं एज कम्पेयर टू नो स्कूलिंग. इट मीन्स रोल ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. That's why government is focusing on this for promote education and awareness on hygiene. So this is a very small topic, but I want you to focus on this topic, so that in the future, whenever topics come on this sector, you will be able to promote or provide or replicate these kind of points. Thank you so much for the patience. Happy Diwali. Thank you.